बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉमसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्चुअल कैंपस की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। आज हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स की सीरीज़ का 30वां लेक्चर है और मैं आपका इंस्ट्रक्टर डॉक्टर फाद मुनीर अब्बासी हूँ। स्टार्ट करेंगे विद द लेआउट ऑफ दिस लेक्चर। इनिशियली जो कि रूटीन हमारी चल रही है, हाईलाइट्स ऑफ द प्रीवियस लेक्चर विल बी डिस्कस्ड। पिछले लेक्चर में जो चीज़ें हमने पढ़ी ज़रा ब्रीफली उनको गो थ्रू करेंगे कि वो क्या कॉन्सेप्ट्स थे, एंड देन विल गो टूवर्ड्स द स्टोक्स प्रॉब्लम्स। स्टोक्स के जो प्रॉब्लम्स हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, कुछ फ्लूइड की फ्लो जो प्रॉब्लम्स हैं, these are referred to as Stoke problems and we will discuss those problems in today's lecture. You will see कि किस तरीके से हम governing equations को reduce करते हैं according to our flow situation and will obtain the solution for the velocity field and the quantities of interest which we are interested in finding out. So आज के लेक्चर में स्टोक्स प्रॉब्लम्स जो दोनों स्टोक्स की फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉब्लम है उनको डिस्कस करेंगे। एक प्रॉब्लम जो है जो फर्स्ट प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करूंगा मैं खुद, एंड सेकंड प्रॉब्लम को थोड़ा मॉडल करके आई लीव इट अप टू यू हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट। मैथमेटिकल मॉडलिंग करके उसकी मॉडल बना के देन विल लीव इट अप टू यू दैट हाउ यू आर गोइंग टू solve it. And at the end of this lecture I'll summarize whatever we are going to do in this lecture. So previously we studied about the generalized Quantitative flow. जैसे कि previous couple of lectures से हमारा एक सिलसिला चल रहा है कि हम applications को discuss कर रहे हैं, applications of governing equations on the flow problems, different किस्म की flow problems जो हैं उनको solve करना, उनको मॉडल करना, ये सारी चीज़ें पिछले दो लेक्चर से कर रहे हैं और कंटिन्यू मज़ीद करेंगे आज के लेक्चर में भी एंड इन द कमिंग लेक्चर एज वेल। तो जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया दैट वाज द जनरलाइज्ड कॉटिव फ्लो। उससे पहले प्लेन पॉजियोले एंड प्लेन कॉटिव फ्लो हम डिस्कस कर चुके हैं। प्राइमरीली अगर इसको कंबाइन करके देखें तो ये तीन केसेस थे। फर्स्ट वन वाज द प्लेन पॉजियोले फ्लो, देन प्लेन कॉटिव फ्लो, देन जनरलाइज्ड कॉटिव फ्लो। एंड इसी तरीके से जब जनरलाइज्ड कॉटिव फ्लो हमने डिस्कस किया तो दिस वाज से जनरलाइज्ड इन द सेंस कि ये पहले दोनों केसेस की जनरलाइज्ड फॉर्म है। पहले दोनों केसेस हम डिड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम दिस जनरलाइज्ड कॉटिव फ्लो। अगर आप याद करें, थोड़ा सा रिकॉल करें प्रीवियस लेक्चर्स को, तो एजम्पशंस ये थी। एक केस के अंदर वी अज्यूम दैट द प्रेशर ग्रेडियंट इज जीरो और कांस्टेंट प्रेशर, तो उसके लिए हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया एंड वी ऑब्टेन्ड अ linear velocity profile. In the second case there was a constant pressure gradient, उसको यूज करते हुए हमने अपनी governing equations को simplify किया and then solve किया and we obtained a velocity profile for that as well. दोनों को combine करके generalized Quantitative flow जो कि previous lecture में जब हमने discuss किया तो it was mainly concerned with the constant pressure gradient as well as the movement of the boundary itself. सो बाउंड्री की मूवमेंट और प्रेशर ग्रेडियंट, कांस्टेंट प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से जो फ्लो होता है हमने उसको जनरलाइज्ड कॉटिव फ्लो का नाम दिया था। इन दैट लेक्चर एज वेल यू शुड हैव ऑब्जर्व्ड कि जब चीज़ें डिस्कस की जाती हैं तो तमाम इनपुट्स का आउटपुट के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है। गो कि इट शुड बी ऑब्वियस फॉर द स्टूडेंट ऑफ साइंसेज कि इनपुट्स का आउटपुट पे असर हमेशा रहेगा, लेकिन किस तरीके से आई जस्ट शोड यू कि यहाँ पे ये जो सोल्यूशन के अंदर टर्म है इस टर्म की कंट्रीब्यूशन इज ड्यू टू कांस्टेंट प्रेशर ग्रेडियंट, एंड फिर आई शोड इट टू यू रिड्यूस्ड फॉर्म के अंदर भी कि अगर आप इस प्रेशर ग्रेडियंट को शुरू में ही जीरो लेके चलें तो देन द सोल्यूशन विल बी रिड्यूस्ड फॉर दैट केस एज वेल। सो इसी तरह फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर जब भी आप परस्यू करेंगे कीप दिस थिंग इन माइंड कि अगर आप प्रॉब्लम को जनरलाइज करते हैं, किसी प्रॉब्लम को एक्सटेंड करते हैं, तो वन थिंग शुड बी वेरी क्लियर कि अगर आप उसके इफेक्ट्स को नलीफाई करें और उसके इफेक्ट्स को जीरो करें तो फिर प्रीवियस केस रिड्यूस हो जाना चाहिए। दैट इज अ मस्ट। फॉर एग्जांपल अगर आपने कॉटिव फ्लो को जनरलाइज किया एंड वी आर इन द ग्राउंड्स ऑफ जनरलाइज्ड कॉटिव फ्लो इन विच वी आर टेकिंग इनटू अकाउंट द बाउंड्रीज मोशन एज वेल, द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बाउंड्री जो कैपिटल यू का नाम दिया, तो जब ये जो जनरलाइज्ड इफेक्ट आप उसमें से रिड्यूस करें तो प्रीवियस केस जरूर रिड्यूस हो जाना चाहिए। जैसा कि जनरलाइज्ड कॉटिव फ्लो के अंदर आई शोड यू कि अगर आप बाउंड्री की मोशन को जीरो कंसिडर करते हैं इन द सोल्यूशन एज वेल तो फिर यू गेट द सोल्यूशन ऑफ द कॉटिव फ्लो इट्सेल्फ।
सिमिलरली अगर आप बाकी चीज़ों को ऑन बोर्ड इसी तरह लेके चलें तो यू विल कम टू नो कि जब भी हम जर्नलाइज से पर्टिकुलर केस की तरफ आते हैं तो देयर शुड बी अ स्मूथनेस. जैसे हम पर्टिकुलर से जर्नलाइज की तरफ जा रहे हैं तो ऐसे ही वी शुड बी एबल टू रिटर्न फ्रॉम द जर्नलाइज्ड to the particular case as well. So this is a simple hint or trick. Keep this thing in mind कि जब भी आप research में pursue करें चीज़ों को तो you should be able to reduce your problem to the particular case as well from the generalized one. Only that will show you that your analysis or the direction which you have chosen for your analysis is correct. और जो analysis आप कर रहे हैं it is pursuing in the right direction. So we'll start with the Stoke's first problem. Well, the fluid mechanics problem, which is referred to as Stoke's first problem, has counterparts in many branches of engineering and physics. In the fluid mechanics context, the situation which is being considered is shown in figure, which I will show you in the figure in the next slide. The x-axis coincides with an infinitely long flat plate above which a fluid exists. Initially, both the plate and the fluid are at rest. Suddenly, the plate is jerked into motion in its own plane with a constant velocity u. Under these conditions, what will be the response of the fluid to the motion of the plate? ये जिस particular problem को हमने Stoke's first problem का नाम दिया, इसके अंदर basically there is a plate lying along the x-axis and there is fluid above it, and we suddenly jerk the plate into motion in its own plane. And we are interested in finding that what will be the effect of this motion on the fluid. Fluid के ऊपर plate की इस motion का क्या effect होता है, and we will calculate that in this lecture. Well, assumptions are we are considering an incompressible fluid, body forces are negligible, unsteady flow. Keep in mind that this is unsteady flow. Previously, when we are going through the Corte and generalized Corte and Pausali flow, we were tackling with the steady flow. And this is the viscous fluid or Newtonian fluid. So we will use the Navier-Stokes equation. Now, as far as the geometry is concerned, or as far as the figure is concerned, take a look at this. Consider that this is the plate. This is x-axis. Now, and the fluid is resting above this plate, the infinite long plate. This is y-axis. Now initially the plate is at rest, and suddenly we just jerk it and move this plate into its own plane with a constant velocity, say capital U. इस capital U velocity से हम इस plate को move करते हैं in its own plane. तो it is quite obvious कि चूँकि plate move की है, so the fluid above this plate will also be affected by this motion, क्योंकि it is resting upon the plate itself. तो प्लेट के मूवमेंट का फ्लूइड के ऊपर असर तो ज़रूर होगा. वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट कि ये क्या असरात होंगे प्लेट की मूवमेंट के इस फ्लूइड के ऊपर. अब अगर ज्योमेट्री को देखें और इन अजम्पशंस को देखें, सबसे पहले वी आर डीलिंग विद द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड. सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि जब हम इक्वेशंस को यूज़ करेंगे वी विल यूज़ द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड प्रॉपर्टी. सेकेंडली, द बॉडी फोर्सेज आर नेग्लिजिबल, सो in the Navier-Stokes equation, we will say neglect the body forces or the effects of the body forces in the Navier-Stokes equation. And thirdly, there is unsteady flow, so the time derivative will stay intact. It won't be equal to 0. And then the viscous fluid, or which guarantees us that we will use the Navier-Stokes equation. Now, since only motion of the plate is in x direction, so the y and z components of this velocity, it is assumed that the fluid will also say coincide with the velocity of the plate. So the y and z components of the velocity of the fluid are equal to 0, or in other words we can simply say that u will be the non-zero component of the velocity, and it will be a function of y and t. So u is equal to y and t, v is equal to 0,
and W is equal to 0 as well, and name this as equation 1 here. Further, let's pursue कि हम कैसे pursue करेंगे. Now keep this thing in mind कि write down the equations which we are going to use. सबसे पहले प्रॉब्लम को देखते हुए और ज्योमेट्री को देखते हुए जो इक्वेशंस बनती हैं फ्लूइड के मोशन की, उनको सबसे पहले राइट डाउन करें, एंड आफ्टर दैट वी विल सी कि हाउ वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई देम. सबसे पहले द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन according to the continuity equation for incompressible, obviously, fluid, because we are taking into account the incompressible fluid. So recall the continuity equation for incompressible fluid, and it states that del dot V is equal to 0, or in other words you can say that partial U by partial X plus partial V by partial Y plus partial W by partial Z is equal to 0, and name this as equation 2. Now law of conservation of momentum for viscous fluid, and that is the Navier-Stokes equation. From the law of conservation of momentum Navier-Stokes equation we have. So making use of the law of conservation of momentum, we simply have rho, the x component. Firstly write down the x component of the Navier-Stokes equation. That is rho partial U by partial T plus U partial U by partial X plus V partial U by partial Y plus W partial U by partial Z is equal to minus partial P by partial X plus mu partial square U by partial X square plus partial square U by partial Y square plus partial square U by partial Z square, and name this as equation 3. Further, the Y and Z components of the Navier-Stokes equation, that is rho partial V by partial T plus U partial V by partial X plus V partial V by partial Y plus W partial V by partial Z is equal to minus partial P by partial Y plus mu into partial square V by partial X square plus partial square V by partial Y square and plus partial square V by partial Z square. Name this as equation. We have named equation 3, so this one will be equation 4. And the Z component states that rho into partial W by partial T plus U into partial W by partial X, obviously here it will be
plus v partial w by partial y plus w partial w by partial z. This is equal to minus partial p by partial z plus mu into partial square w by partial x square plus partial square w by partial y square and a plus sign partial square w by partial z square, and this is equation 5. Now अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ज़रूर आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं कि हम इन इक्वेशंस को कैसे रिड्यूस करेंगे. एक चीज़ यहाँ नोटवर्दी है that we have not written any body force effects in these momentum equations. Momentum equation की x, y, z components में किसी में भी हमने body force के effects को consider नहीं किया, क्योंकि we are given that the body forces are negligible or there are no body forces present in this analysis. So here it is, there are no body forces acting in these equations. Further, now take a look at the geometry as well as the assumptions of the problem. Firstly, the incompressible fluid, we have used this fact कि हमने मोमेंटम इक्वेशन के लिए भी और नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन के लिए भी हमने इनकम्प्रेसिबल फॉर्म यूज़ की है, प्लस द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के लिए भी हमने इनकम्प्रेसिबल फॉर्म यूज़ की है. सेकेंडली, बॉडी फोर्सेस आर नेग्लिजिबल. बॉडी फोर्सेस चूँकि नेग्लिजिबल हैं, सो हमने जब नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन के तीनों कंपोनेंट्स राइट डाउन किए तो वी हैव नॉट टेकन इनटू अकाउंट द बॉडी फोर्सेस और वी हैव से कंप्यूटेड देम इक्वल टू 0. Third one of the assumptions is that the flow is unsteady. So we have not come on, what I'm going to say. Let's start from this third one again. So the third one states that the flow is unsteady. So कोई भी time derivative जो है हमने 0 के equal put नहीं किया. Then the fourth one is the viscous fluid. So we have used the momentum equations for the viscous fluid, or that is the Navier-Stokes equation. Now ये तमाम चीज़ें we have taken into account here. And further, ये जो equation 1 है जो हमने geometry को देखते हुए write down की थी. Now if we substitute this equation 1 into equations 2, 3, 4 and 5, then we'll see what we get at the end. इन इक्वेशंस के अंदर इक्वेशन 1 की वैल्यू अगर पुट करें, सबसे पहले यूजिंग 1 into we get that we simply get that 0 is equal to 0, or it is identically satisfied. अगर इक्वेशन 1 को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करें, since u is a function of y only, y and t, so this derivative of u with respect to x will vanish, and similarly other two derivatives will also vanish since u is the only non-zero component of the velocity. चूँकि सिर्फ u ही non-zero component है, बाकी तमाम components v and w are equal to 0, so जब यहाँ पे equation 1 में से values put करेंगे तो this equation will identically be satisfied or it will give us a 0, 0 answer. Now, making use of one in say 3 to 5 मोमेंटम इक्वेशन के तीनों कंपोनेंट्स के अंदर अगर इक्वेशन 1 को यूज किया जाए तो व्हाट वी विल गेट सिंपली. अब देखते जाएं स्टेप बाय स्टेप कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू. सो सिंस u is a function of t and y alone, from this equation 1 you can see that u is the function of y and t alone, so the only derivatives with respect to t and y will survive. The only non-zero terms will be this and this
derivative with respect to y. All of the derivatives will vanish, and in the y and z components of the momentum equations, since v and w are equal to 0, so these equations will give us only information about the pressure gradient. So let's write it down. From the x component of the momentum equation, we'll simply get that rho partial u by partial t is equal to minus partial p by partial x plus mu, which is the viscosity of the fluid, partial square u by partial y square, and name this as equation 6. And from the y component of the momentum equation, we'll get minus partial p by partial y is equal to 0, and from the z component we'll get minus partial p by partial z equal to 0, and name these equations as equation 7 and equation 8. So you should be following me कि हम किस तरह term by term इस problem को reduce कर रहे हैं, कि जितना given geometry and given conditions के लिहाज से हम इसको जितना simplify कर सकते हैं, we will go for that. Now equation 6 is the x component of the momentum equation in the reduced form, and equation 7 and 8 are the reduced y and z components of the momentum equation. अगर आप equation 7 और 8 को अगर थोड़ा सा गौर से observe करें तो एक simply ये दोनों equations हमें simply pressure के बारे में information देती हैं, and that too from seven and 8 we know that pressure is not a function of, say, y and z. इन दो इक्वेशन से यही इंफॉर्मेशन हमें प्रेशर के बारे में मिली कि प्रेशर ना y का फंक्शन है और ना ही z का और z कंपोनेंट का. दैट इज p is only function of x itself. Now, in absence of pressure gradient, if pressure gradient is absent or there is no variation in pressure, then ये term जो equation 6 के अंदर appear हो रही है, it will also be equal to 0, or we will simply get that partial u by partial t is equal to mu partial square u by partial y square. And this is, say, equation we have named to 8, so this is equation 9 here, where nu is equal to mu over rho. और अगर याद करें कि हमने mu over rho को शुरू में when we are going through the primary definitions, so this is the dynamic and this is the viscosity, and when divided by the density itself we get the relationship itself. Now equation 9 को अगर आप देखें तो this is the partial differential equation which is of second order with respect to the space variable y and is of first order with respect to time itself. Also boundary conditions की जहाँ तक बात है तो boundary conditions we will see कि हम किस तरीके से boundary conditions को write up करेंगे for this problem. Since you are the students of mathematics, so you should be able to figure it out. अभी तक इस equation को देख के you should say get an idea कि how we are going to solve it. Partial differential equation है and it independent variable यहाँ पे दो हैं which is t which are t and y, and dependent variable which is u itself. We have to solve this equation for u, and so the boundary conditions required here will be written making use of the geometry. Geometry हमारे पास जिस किस्म की है उसको देखते हुए हम boundary conditions write up करेंगे, and you will see that how I'm going to do that.
Now for the problem under the consideration, the boundary conditions are u at 0 t. For y0, since u is a function of y and t, so for y0 and t we have 0 for t less than equal to 0 and capital U for t greater than 0, and u at infinity t is equal to 0. Now name these equations as 10 and this one as 11. देखिए इन बाउंड्री कंडीशंस को कैसे हमने राइट अप किया, यानी इक्वेशंस को हमने कैसे लिखा. पहली चीज कि u at 0 t represents the conditions at the boundary or at the lower plate और जिस surface के ऊपर which is set into motion, जिसकी वजह से we are going to discuss the fluid's motion. हमने उस प्लेट के लिए हमने ये बाउंड्री कंडीशन जो कि क्वेश्चन 10 के अंदर लिखी हैं ये हमने राइट अप की. एंड इक्वेशन 11 इज ऑब्वियसली से फार अवे फ्रॉम दिस बाउंड्री, फार अवे फ्रॉम द बाउंड्री द इफेक्ट्स ऑफ द movement or the motion will be equal to 0, so the velocity will be equal to 0 far away from the solid boundary or the moving surface. Now this u at infinity t is equal to 0 because far away from the boundary the velocity will be equal to 0, and this equation is written by the fact that for t less than or equal to 0 the plate is at rest, and for t equal to t greater than 0 the plate is moving with a constant velocity capital U here. Now interesting is that कि t0 क्या चीज़ है. t0 that is the time period जहाँ से हम इस सिस्टम को ऑब्जर्व करना शुरू कर रहे हैं, एंड फ्रॉम जिसके बाद जो है वो the plate will be set into motion and we are interested in finding the effects of that motion on the fluid. अब उस motion का fluid के ऊपर क्या असर है हम ये देखना चाह रहे हैं. देखें we have now two boundary conditions with respect to the space variable, that is y, and one boundary condition here at infinity. So it is say rather interesting to solve this equation 9 making use of the boundary conditions given in 10 and 11. Interesting fact will be that you should yourself be able to figure it out, चूँकि अब यहाँ तक जो formulation है, ये जो mathematical modeling है वो तो ख़त्म होगी. हमने एक physical system को convert कर लिया into say system of differential equation के system में convert कर लिया with some boundary conditions, with some derivatives. Now we are going to solve it. अब इस equation को solve करना which is purely a mathematical work. You should be able to at this point you should be able to figure it out that how we are going to solve this equation according to the boundary conditions. Since it is the partial differential equation, so are available to us for the partial differential equation. अगर तो अभी तक आपके जहन में ये आ चुका कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, तो एक पिक्चर आपने बना ली कि इस इक्वेशन को देखते हुए हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, दैट्स वेरी गुड. अगर नहीं किया तो ऑब्वियसली आई विल गो फॉर दैट एंड आई विल सॉल्व इट फॉर यू हेयर. बट आई स्टिल वांट एंड आई विल स्टिल से कि आप इस लेक्चर को यहीं पे 2-1 मिनट पॉज करें, इसको पॉज करके टेक अ क्लोज लुक एट दिस इक्वेशन एंड दीज बाउंड्री कंडीशंस, दैट हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दीज इक्वेशंस. हम इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. एक चीज़ ज़रूर मज़ीद यहाँ डिस्कस करता चलूँ कि चूँकि सेमी इन्फिनिट डोमेन है, दैट इज़ इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 0 to infinity विद रिस्पेक्ट टू y. देख रहे हैं फ्रॉम y 0 to y infinity तक जा रहे हैं. सो टेक दिस फैक्ट ऑल्सो इन टू अकाउंट, इस फैक्ट को भी इनकाउंटर करना ज़रूरी है. सो अगेन just stop it here for a while and take a close look at this and try to recall
It doesn't matter that you have something say falls in your mind कि आपका guess गलत हो सकता है या ये, it doesn't matter, but at least what matters is that you should be able to say figure it out and come up with something. कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा आइडिया ज़रूर लेके आए, कोई ऐसी methodology ज़रूर आपके ज़हन में आनी चाहिए कि जिससे you should be able to solve this equation. This is what I think you should be doing. Now this problem lends itself to solution by Laplace transform. Here we are going to solve it by Laplace transform. It also can be solved making use of the similarity methods. Similarity methods को use करते हुए भी इसको solve किया जा सकता है. ज़रूर है कि अगर आप इसको separation of variables से solve करें तो that कि वो कैसे हो सकती है या नहीं, but keep one thing in mind. मैं उसके लिए कोई आपको क्लैरिफाई नहीं करूंगा कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे या कैसे नहीं सॉल्व कर सकते या क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन इतना ज़रूर आपको यहाँ पे उसके लिए हिंट दूंगा कि वी आर डीलिंग विद द सेमी इन्फिनिट डोमेन. सेमी इन्फिनिट डोमेन के लिए क्या जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स है, will that be an applicable source to solve the equation? I leave it up to you कि सेमी इन्फिनिट डोमेन के लिए क्या आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स को यूज करते हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं. सो दिस इज टोटली अप टू यू टू आंसर दिस थिंग. वेल यू शुड बी एबल टू से फिगर इट आउट कि सेमी इन्फिनिट डोमेन के लिए किस तरीके से ये हो सकती है, हो भी सकती है नहीं. तो बिफोर ट्राइंग टू सॉल्व इट विद द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स आई लाइक टू से कि पहले ये ज़रूर सोच लें क्या है ये उससे सॉल्व भी हो सकती है या नहीं. बट प्रेजेंटली लेप्लास ट्रांसफॉर्म से और सिमिलैरिटी मेथड से हम इस सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे विल गो फॉर द लेप्लास ट्रांसफॉर्म सॉल्यूशन ओनली. यू कैन सॉल्व इट फॉर द say similarity methods as well, but I will prefer the Laplace transform because most of the students are familiar with that step as well, with that method. So solution by Laplace transform. Laplace transform को यूज करते हुए we are going to solve this equation. अगर जिन स्टूडेंट्स के माइंड में फौरन ये क्लिक किया कि we can solve it making use of the Laplace transform, that is very good. I really say appreciate those students के जिनको कम से कम इतना ज़रूर आइडिया था कि हमने इसको Laplace transform को यूज़ करते हुए सॉल्व करना है. जिनको नहीं था आइडिया, what can I say except that you should be improving your mathematical skills and how you should be pursuing towards a particular problem. इस चीज़ को ज़रूर ज़हन में रखें कि हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर कोई सुपर नेचुरल किस्म की चीज़ हम नहीं कर रहे हैं. सिंपली मैथमेटिकल मॉडलिंग है जिसमें किसी भी फ्लो प्रॉब्लम को हम रिड्यूस करते हैं एंड कन्वर्ट देम इनटू मैथमेटिकल इक्वेशंस. किसी भी फिजिकल सिचुएशन को मैथमेटिकल इक्वेशंस के अंदर कन्वर्ट करते हैं एंड देन वी सॉल्व दोज इक्वेशंस टू ऑब्टेन द सॉल्यूशन. सो एट द एंड ऑफ द डे करना हमने वही है कि वी हैव टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल या इंटीग्रल इक्वेशंस इन सम अदर केसेस एज वेल. तो सॉल्व तो डिफरेंशियल इक्वेशंस और इंटीग्रल इक्वेशंस ही करनी होंगी बिकॉज वी आर pursuing this course from a mathematical point of view. So your equation solving techniques should be very strong. I must say कि जिन लोगों की equation solving techniques इतनी strong नहीं होती, applied mathematics के अंदर they used to suffer in their research as well. Equation को देख के ही you should be able to figure it out कि how I am going to pursue it. कौन सा method use करते हुए हम इसको solve कर सकते हैं और कौन सा method यहाँ पे apply करना दुरुस्त होगा. प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम चीज़ें वेरी ज़रूर करती हैं, बट देर आर सर्टन टेक्निक्स कि किस किस्म की प्रॉब्लम के ऊपर आप कौन सी मेथडोलॉजीज अप्लाई कर सकते हैं और किस किस्म की प्रॉब्लम्स के ऊपर आप कौन सी टेक्निक्स अप्लाई नहीं कर सकते. सो कीप दिस थिंग इन माइंड एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर प्रॉब्लम सॉल्विंग और इक्वेशन सॉल्विंग टेक्निक्स एंड skills as well. So we'll solve this equation, equation 9, subject to the boundary conditions 10 and 11, making use of the Laplace transform. And we define
Now the Laplace transform is defined as Laplace transform को कैसे डिफाइन किया जाता है जी? Laplace transform of a function say u, which is a function of y, and s is defined as e to the power minus st u of y and t dt, and this is the definition of Laplace transform of function u of yt. किसी भी फंक्शन से u of yt को अगर आप उसकी Laplace transform कैलकुलेट करना चाहते हैं, you will calculate this integral and ultimately you will get the transformed function or u bar as a function of y and s, which is the new variable here. So ये integral calculate करेंगे तो simply get the Laplace transform of this function u of yt. So making use of this equation 12, using 12, the transformed boundary value problem 9 to 10 and 11, which is the boundary value problem, can be written as boundary value problem transformed into making use of the Laplace transform can be written as s over nu u of say y and s is equal to t square u of y s over dy square, or in other words you can say that, or the transformed boundary value problem will take the form of this type: d square u by dy square minus s over nu u is equal to 0, and name this as equation 13 because we have named this last one as equation 12. Now the boundary conditions obviously will also be transformed, and these will take the form u of 0 s is equal to capital U over s, and u at infinity s will be equal to 0, and this is equation 14. अब ये Laplace ट्रांसफॉर्म को यूज़ करते हुए हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया. Now this is the second order differential equation, ordinary differential equation, and we have two boundary conditions, so we should be able to solve it with a great piece of ease here. Now solution of 13, solution of 13 is u is equal to a e to the power s over nu say y plus b e to the power minus under root s over nu y, and name this as equation 15. Now using boundary conditions in 14 to calculate A and B, we simply get boundary conditions को यूज करते हुए जो constant of integration जो A and B appear हुए हैं, इनको अगर फाइंड आउट करें तो वी विल गेट दैट
A is equal to 0 and B is equal to capital U over S, and simply transformed U is equal to capital U over S e to the power minus under root S over nu y. This is our solution of this problem, but obviously this is say transformed solution. हमने इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसकी कैलकुलेट करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू कम्प्लीटली डिटरमिन कि हमारा सोल्यूशन जो है वो किस फॉर्म का है, किस टाइप का है. अभी इट इज़ द ट्रांसफॉर्म्ड पार्ट एंड वी कैन से take the inverse Laplace transform of this to completely determine what our velocity field will be like in the y and t form or y and t domain. And so therefore taking the inverse Laplace transform, we get that u of yt is equal to say capital U complementary error function y over 2 under root nu and t. So we'll get the solution in the form of error complementary function, or where error complementary function is equal to 1 minus error function of say z, or z is anything. So this is our solution of the Stokes first problem in the y and t frame. Error complementary function की फॉर्म के अंदर हमने इसका solution obtained किया because we were say given with the say the Laplace transform and we had to take the inverse Laplace transform. So the solution is in the form of error complementary function. Now take a look at this, that this is the velocity capital U, or this is the velocity of the wall. जो lower wall या जो boundary है जो which was moving with the uniform velocity capital U, अगर वो velocity zero कर दी जाए, then the velocity of the fluid will also be equal to zero, or in other words there will not be any type of flow taking place. Further, it depends upon the y, the nu and the time itself as well. So y nu और time के ऊपर भी solution is depending. So keep this thing in mind कि ये तमाम चीज़ें जो हम consider करेंगे, जो तमाम inputs हैं वो output के ऊपर असरअंदाज ज़रूर हो रहे हैं. Since nu is say mu by rho, so viscosity के ऊपर and density के ऊपर भी solution dependent है. It is dependent upon this constant wall velocity or capital U as well, and it depends upon the y the coordinate as well, so and also with time. So जैसे जैसे ये solution increase करते जाएंगे, एक और चीज़ यहाँ ज़रूर observe करते जाएं, जैसे जैसे ये velocity constant velocity capital U increase करेगी, the velocity of the fluid will also increase. Likewise इनके effects भी velocity के ऊपर होंगे. अब ज़रूर एक और चीज़ है जो यहाँ पे आप देखते चलें, कोशिश करें since you are going to use the computation softwares in your research as well, तो कोशिश करें कि इस जो solution को हमने plot किया है here, say equation static, इसको plot करें making use of the plotting software or the computation software, say MATLAB or Mathematica or Maple, इनको use करते हुए इसको plot करें. इसको plot करके देखें से कि किस तरीके से हर एक जो वेरिएबल या पैरामीटर इस सॉल्यूशन के अंदर अपीयर हो रहा है उसका वेलोसिटी के ऊपर क्या असर है. देन यू विल कम टू नो कि कैसे ये y का इस वेलोसिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है,
इस न्यू का क्या इम्पैक्ट है, देन टाइम पीरियड का क्या इम्पैक्ट है, एंड यू विल एनालाइज कि कैसे वाई या टी इंक्रीज करने से वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज करेगी. सो दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू पीपल इफ यू आर गोइंग टू परस्यू इन दैट डायरेक्शन. एक चीज. दूसरी ये कि इस प्रॉब्लम के पैटर्न को जरूर जहन में रखें और इसको जहन में रखते हुए देखें कि हमें इसी तरह चीजों को परस्यू करना और गिवन फ्लो सिचुएशन को देखते हुए हम गवर्निंग इक्वेशंस को जो है वो सिंप्लीफाई करना है, एंड देन वी विल सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस जैसे भी अप्रोप्रिएट मेथड किसी भी प्रॉब्लम के लिए हो सके. फर्दर ये तो दिस वाज द सॉल्यूशन बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म. अगर आप इसी इक्वेशन को और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें मेकिंग यूज ऑफ द सिमिलैरिटी पैरामीटर्स, तो I just give you a hint here. This is a hint for similarity solution. For similarity solution, put U is equal to capital U f of eta and eta equal to y over 2 under root nu t. सिमिलैरिटी सोल्यूशन के लिए जो सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्म को यूज करते हुए सोल्यूशन ऑब्टेन करेंगे उसके लिए ये सब्स्टिट्यूशन यूज करें. इस सब्स्टिट्यूशन को यूज करते हुए इक्वेशन को सॉल्व करें एंड देन कंपेयर योर रिजल्ट्स के किस तरीके से हमने जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म से solution calculate किया. either it is say compatible with this one or it is not. Say it is a hint for you people. If you are interested in solving this equation by another method that is a similarity solution or similarity parameters, तो ये नया पैरामीटर ईटा जो इंट्रोड्यूस करेंगे हम इस इक्वेशन के अंदर, that will be the independent parameter in that context. इसी तरह आप उसको ट्रांसफॉर्म भी करेंगे, सब कुछ ट्रांसफॉर्म करके द डेरिवेटिव्स एंड द बाउंड्री कंडीशंस विल आल्सो बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ईटा एंड यू विल सिंपली गेट differential equation, an ordinary differential equation, and you can solve it with a great piece of ease as well. So these are the transformations if you are interested in solving this equation by similarity method or making use of the similarity parameters. I mean to say कि इक्वेशन जब आप उसको मॉडल कर लें, किसी मॉडल को उसको सिंप्लीफाई कर लें, तो then there are other methods as well to solve this equation. More than one method. There can be more than one methods to solve a particular equation. Obviously सारी equations solvable भी नहीं हो सकती, कुछ are very complex और उनके लिए you have to make use of the computational softwares. तमाम equations के तमाम प्रॉब्लम्स के जो हैं एनालिटिकल क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं भी करते. सो इन दैट केस यू हैव टू गो फॉर द न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस एज वेल. इसलिए बेसिक ये जो इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने का मकसद ये था कि आपको एक आइडिया ज़रूर हो जाए कि हमें गवर्निंग इक्वेशन की मौजूदगी के अंदर जब हम गवर्निंग इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, टेकिंग अ लुक एट द ज्योमेट्री एंड the flow considerations, उनको देखते हुए सबसे पहले we will model our problem, and then when the problem is modeled and we have a system of equations, a system of partial or differential equation, एक equation है, कुछ boundary conditions हैं, उनको use करते हुए how we are going to solve this. So the problem solving technique will play a great part in your research if you are looking to say do research in the field of fluid mechanics. So this will play a very large or very key role in your research. Problem solving techniques को improve करें and then you will see कि किस तरीके से you will enjoy your research in fluid mechanics. Further इसको इसी प्रॉब्लम को सिमिलैरिटी सॉल्यूशन से सॉल्व करने की कोशिश करें. You will enjoy it. It is worth solving it that way. And now it is time for the Stoke's second problem. ये जो अभी तक हमने डिस्कस की that was the Stoke's first problem, and now it is time for the Stoke's second problem. Stoke's second problem is quite similar to that of the Stoke's first problem except for one fact. एक चीज से फर्क है, जैसा कि
Stokes first problem के अंदर भी as it is we had a plate, say infinite plate in the x direction. This is the x direction and this is the say y axis, and there is fluid all over this infinite plate. Y extends from 0 to infinity. This is say y equal to 0. अच्छा, बाकी सारी चीज़ें यहाँ ज़रूर सेम है. Only the fact कि Stokes first problem के अंदर there was a certain motion of this plate or this boundary or this wall, certain motion था with constant velocity u. But in Stokes second problem, it is not a sudden motion of this boundary. Instead, there is an oscillation of the boundary, or say at this y equal to 0 or at the boundary, we simply have u is equal to capital U cos omega t, where omega is the frequency of oscillation. So boundary conditions में फ़र्क आ गया. अगर उसको देखें आप Stokes first problem को, तो यहाँ पे there was no cos function, so कोई trigonometric function यहाँ पे नहीं था हो रहा. But in Stokes second problem there is a sinusoidal oscillation in the boundary, and here capital U is say the amplitude of oscillation, and cos omega t is the sinusoidal part of it, or the governing equation will remain the same, or in other words the boundary conditions will become u at 0 t capital U cos omega t. This will be the boundary condition which will be different from the case given in Stokes first problem. और अगर completely अगर इसको लिखें, and the system will become, and the boundary value problem will finally become partial square u by partial y square is equal to partial u by partial t. Name this as equation 1, and the boundary conditions will be u at 0 t is equal to capital U cos omega t, and u at infinity t will be equal to 0. So far away from the boundary, u is equal to 0. And further एक और चीज़ जो है मज़ीद देखी जा सकती है, अगर आप इसको लिमिटाइज करना चाहें, or there should be another plate on top of it. अगर आप अपर डोमेन को या सेमी इन्फिनिट डोमेन को डिस्कस करने के बजाय अगर आप कोई फाइनाइट डोमेन डिस्कस करना चाहें, तो यू कैन सिंपली गो फॉर द बाउंड्री कंडीशन इंस्टेड ऑफ दिस वन. यू कैन से दैट or for finite domain u at, I'm talking about this boundary condition alone, u at yt, आप yt इसको कह सकते हैं, और you can simply say that कोई भी हाइट जिस पर्टिकुलर हाइट के ऊपर दूसरी प्लेट मौजूद है, you can simply say that it is finite at that height. For that as well, if it is 0, it is 0, and for other parts you can convert it in that form. But that will be obviously not the Stokes second problem. Stokes second problem will remain to be
ऑफ दिस टाइप। अच्छा, अगर इस इक्वेशन को मजीद इक्वेशन 3 जिसका हमने नाम दिया, इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहें, यू कैन सिंपली से दैट दिस जो बाउंड्री कंडीशंस हैं इनको यूज़ करते हुए हमने इक्वेशन 1 को सॉल्व करना है। तमाम कंप्यूटेशन सिंप्लीफिकेशंस उसी तरह वर्क करेंगे जिस तरह वी हैव बीन डूइंग फॉर द स्टोक्स फर्स्ट प्रॉब्लम, एंड वी विल रीच टू दिस इक्वेशन। नाउ आई लीव इट अप टू यू कि आप इस सिस्टम को कैसे सॉल्व करते हैं, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को subject to these boundary conditions, how you are going to solve these equations. Now equation 1 and the boundary conditions given in 2 to 3 can be used to solve this problem or Stoke's second problem. अब इस किस्म की प्रॉब्लम्स के अंदर यू कैन गो फॉर द अदर वैरायटीज एज वेल। आप इसको अगर इफ यू फाइंड योर सेल्फ इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग फ्लूइड मैकेनिक्स प्रॉब्लम्स विच आर ऑफ इंटरेस्ट, तो आप बाउंड्री कंडीशंस के अंदर वेरिएशंस दे के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि एक एग्जांपल मैंने यहाँ आपको दी, सॉल्व फॉर द फाइनाइट डोमेन इन सेमी इनफिनिट डोमेन के बजाय गो फॉर द फाइनाइट डोमेन एंड टेक द अपर प्लेट टू बी से एट रेस्ट और इन एनी मोशन sort of a thing, say at y equal to yt or y equal to bt, कोई भी height suppose कर लें जिसके ऊपर there is a second plate, and solve it for that. It will be an interesting problem for you to solve, or the modified problem, modified Stokes problem for you to solve if you find yourself interested in solving these equations. So I leave this equation or the Stokes second problem to you. If you find yourself interested in solving it, you should go for it. खुद इसको सॉल्व करके इक्वेशन चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करना मकसद नहीं है, सिर्फ आपका इंटरेस्ट बनाना मकसूद है, ताकि आप देखते रहें कि किस तरीके से हम फ्लूइड मैकेनिक्स की प्रॉब्लम को परस्यू करते हैं और किस तरह फिर बाउंड्री कंडीशंस के अंदर या इक्वेशन के अंदर को थोड़ी सी चेंज जो है हमारे लिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा मुश्किल या बहुत सा आसान भी कर सकती है। दिस इज़ हाउ वी परस्यू इन आवर एनालिसिस इन फ्लूइड मैकेनिक्स एज वेल। इसी तरह फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर बाउंड्रीज के अंदर, बाउंड्री कंडीशंस के अंदर, गवर्निंग इक्वेशंस के अंदर थोड़ी सी कोई चेंज हो, वो हमारे लिए चीज़ों को बहुत आसान या बहुत मुश्किल भी कर सकती है। सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि जो भी वेरिएशन आप कर रहे हैं या जो भी एनालिसिस आप परफॉर्म कर रहे हैं, उसका इन्फ्लुएंस रिजल्ट के ऊपर क्या होता है, उसका इन्फ्लुएंस मैथमेटिकल इक्वेशंस के ऊपर क्या होता है। इस तरीके से इस एनालिसिस को परस्यू करें कि आप स्टेप बाय स्टेप, हर स्टेप पे ये देखें कि जिस इफेक्ट को हम एनालाइज करना चाह रहे हैं, जिस क्वांटिटी को हम एनालाइज करना चाह रहे हैं, इनपुट्स के उसके ऊपर क्या इफेक्ट्स हैं। जैसे कि स्टोक्स फर्स्ट प्रॉब्लम का जब सोल्यूशन देख रहे थे तो आई टोल्ड यू कि अगर इसमें आप कैपिटल यू जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यू विल गेट अ जीरो वेलोसिटी, सो देयर विल बी नो मोशन ऑफ द फ्लूइड। लाइकवाइज इन द स्टोक्स सेकंड प्रॉब्लम, चूंकि ऑसिलेटरी बाउंड्री है, सो अगर ऑसिलेशन आप जीरो करें तो यू शुड गेट द स्टोक्स फर्स्ट प्रॉब्लम सेल्फ। यहाँ पे अगर आप ऑसिलेशन को जीरो पुट करेंगे तो ऑब्वियसली बाउंड्री कंडीशन रिड्यूस हो जाएंगी इनटू दैट ऑफ स्टोक्स फर्स्ट प्रॉब्लम। सो इसी तरह बाउंड्री कंडीशंस के साथ साथ अगर आप सोल्यूशन में भी ऑसिलेशन जीरो सब्स्टिट्यूट करें तो यू शुड गेट द सोल्यूशन ऑफ द स्टोक्स फर्स्ट प्रॉब्लम। दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड दिस इज हाउ यू शुड बी वर्किंग on it. And with this I'll take you to today's summary of whatever we did in today's lecture. Today we'll discuss the Stokes problems. Stokes के well known जो problems हैं, Stokes first and Stokes second problem, जो हमने जो fluid mechanics के अंदर काफ़ी importance रखते हैं, particularly for a beginner जो fluid mechanics के अंदर अपनी studies को pursue करना चाहते हैं, उनके लिए these are of very से लार्ज की इंटरेस्ट। ज़रूरी ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के इस इक्वेशन को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉटे, जनरलाइज्ड कॉटे एंड पॉजियाली फ्लो विच वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स, और एक प्रॉपर पैटर्न को नोट करते जाएं कि किस तरह हम फ्लूइड मैकेनिक्स की किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और किस तरह उसको परस्यू करते हैं फ्रॉम द मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। पहला स्टेप ज़रूर याद रखें कि हमने इक्वेशंस को और सिस्टम को देखते हुए अपनी गवर्निंग इक्वेशंस राइट डाउन करनी है, देन वी हैव टू सिंप्लीफाई देम, एंड सिंप्लीफाई करने के बाद वी शुड गो और वी विल गो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ इट, एंड देन सॉल्यूशन का एनालिसिस वी कैरी आउट मेकिंग यूज ऑफ द ग्राफ्स एंड टेबल्स एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि जब भी एनालिसिस को परस्यू करेंगे
तो ये स्टेप्स जो हैं हमें फॉलो करने ज़रूर पड़ेंगे, unless until you propose something new for the when your time comes. So in today's lecture, Stokes first and second problem discuss किए. Stokes first problem के अंदर we dealt with the sudden motion of the boundary or the constant motion of the boundary, and in Stokes second problem we dealt with the oscillatory boundary for the Stokes second problem, and you saw that के बाउंड्री कंडीशंस के चेंज होने से एंड ज्योमेट्री के चेंज होने से जो है वो चीज़ें फ़र्क ज़रूर हो जाती हैं. अगर ज्योमेट्री स्टोक्स फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉब्लम की सेम थी, सिर्फ बाउंड्री कंडीशन का फ़र्क था, तो तब भी चीज़ों पे काफ़ी सारा असर पड़ेगा एंड थिंग्स यूज टू गेट कॉम्प्लिकेटेड एज वेल. स्टोक्स फर्स्ट प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मेकिंग यूज़ ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया हमने. हिंट ज़रूर दे दी कि आप किस तरीके से स्टोक्स फर्स्ट प्रॉब्लम को सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्म्स के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं. स्टोक्स सेकंड प्रॉब्लम के लिए सिर्फ आपको गवर्निंग इक्वेशन और बाउंड्री कंडीशंस आई रोट देम, एंड सो इफ़ यू फाइंड योरसेल्फ इंटरेस्टेड in solving these equations further for your own interest, not from the examination point of view, you should go for it, and I just guarantee that you will enjoy every bit of it. मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर से ज़रा फेमिलियर हों और कोशिश करें कि ये जो सोल्यूशन हमने ऑब्टेन किए इनको ड्रॉ करें एंड देन एनालाइज इट ग्राफिकली, कि ग्राफ्स बना के इनको एनालाइज करें दैट हाउ दीज सॉल्यूशंस बिहेव अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस. नाउ विद दिस इट इज़ टाइम फॉर टुडेज कोट, एंड it reads that it does not matter what others think of you. I have written the word others in inverted commas so that you should get an insight of it, that what others mean in this sentence. So keep this in mind कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग या आपके नाक़दीन या आप पे तंज़ और तशनी करने वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं. मैटर क्या करता है कि आपका क्या विजन है, आपका अपने बारे में क्या माइंड सेट है. ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक. अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहें, पॉजिटिव रहें, अपनी अप्रोच पॉजिटिव रखें. इससे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं या लोग क्या सोचेंगे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता. अनलेस अंटिल योर अप्रोच एंड योर थिंकिंग इज़ पॉजिटिव, इट डजंट मैटर व्हाट अदर्स थिंक ऑफ यू. मेक योर ओन लाइफ थ्रू योर ओन एफर्ट. कोशिश करें और कोशिश करते रहें, कॉन्टीन्यूस एफर्ट करें, कॉन्टीन्यूस हार्ड वर्क करें. अपने इर्द गिर्द को अगर थोड़ी देर उसको साइड पे भी रख दें कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं, इससे आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा. ज़रूर फ़र्क डालने वाली सिर्फ एक चीज़ है कि आपका क्या माइंडसेट है और आप ज़िंदगी को कैसे परस्यू करते हैं. दिस इज़ द ओनली थिंग दैट मैटर्स, एंड कीप दिस थिंग इन माइंड दैट यू आर द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लाइफ. अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा या बहुत बुरा बनाने के लिए आप ही हैं जो कुछ कर सकते हैं. सो यू शुड गो फॉर इट. जब कॉन्सिक्वेंसेस आपने भुगतने हैं तो फिर इनपुट्स देने वाले तो ये इर्द गिर्द के लोग नहीं हो सकते. ऐसा ज़रूर है कि कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं इंसान की ज़िंदगी के अंदर, उसकी फैमिली है, उसके वालिदैन हैं, उसके दोस्त हैं, जिनकी राय ज़रूर मैटर करती है. उन लोगों से रिलेटेड ये नहीं है जुमला, उनकी राय ज़रूर मैटर करती है. उनका ज़रूर इनपुट लें, अपने बिहेवियर के ऊपर ज़रूर चेक रखें, लेकिन इनपुट ज़रूर देते रहें अपनी लाइफ के अंदर उसको बेहतर करने के लिए. अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को बहुत सी आसानियाँ दे. टिल आवर नेक्स्ट लेक्चर, इट्स अल्लाह हाफ़िज़ फ्रॉम माई साइड.